Welcome back. This is Election Premier League and we're talking about the Gujarat elections which kicks off on the 1st of December. It's going to be held in two phases, the 1st of December and then subsequently the 5th before the results are out on the 8th. Today, let's talk about the Jamalpur-Khadiya constituency. It's a constituency in Ahmedabad that has now become a prestige battle for the BJP. Now, one of the founders of the Gujarat state unit, Ashok Bhatt, was once the MLA here for 25 years straight. And this seat was with the BJP until 2017 when the Congress managed to wrest it from the BJP 5 years ago. Now, Bhushan Bhatt, son of Ashok Bhatt, is contesting from the seat once again after his loss in 2017. In his interview with Times Now, he told us why he believes the seat, despite having gone to the Congress in 2017, is firmly in the BJP's grasp this time around. किस तरीके से आप इस बार जनता के पास जाएंगे, क्या क्या उन लोगों को आप वादे कर सकते हैं इस बार? वादा करना हमारा काम नहीं जी, वचन देना हमारा काम नहीं, और काम है तो सरकार जो काम कर रही है, जो नीतियां बना रही है, और सरकार जो नीति बनाती है, सरकार जो काम करते हैं, वो समाज के हर घर तक ले जाना। सरकार एक समाज के लिए काम नहीं करती, सरकार सब समाज के लिए काम करती। क्योंकि आपने जातियों की बात करी, जातीय समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको टिकट दिया गया है 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट्स में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, या आमतौर पर देखा गया है क्योंकि हिंदुत्व राजनीति को ज़्यादा आगे बढ़ाती है बीजेपी। किस तरीके से इस बार मैनेज करेंगे, किस तरीके से इस बार उन लोगों के पास जाएंगे और किन मुद्दों के साथ जाएंगे? सरकार ने किए हुए काम लोगों के लिए पिछले 2 साल में पहले कोरोना सिर्फ यहाँ पर नहीं था, पूरे विश्व में था। जब कोरोना के समय पर सरकार ने जो नीतियां बनाई, सरकार ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कई कार्यकर्ता लोगों के बीच रहे। वैक्सीनेशन कैंप हो, राशन देने का काम हो, दवाई देने का काम, जो काम किया है, लोग जानते हैं कि उस वक्त पर गुजरात की कांग्रेस, हमारे विधायक जयपुर में जाकर बैठे थे तो पियानो बजाते थे। यहाँ जनता परेशानी में थी, मुश्किल में थी। उस वक्त कौन बीच में आए थे, लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक समाजों का उपयोग किया है, वो जनता जान गई है, लोग जान गए। उनके पास 4 वोट बैंक थी, 4 समाज की वोट बैंक थी, क्षत्रिय, आदिवासी, दलित, मुस्लिम। आज देखो बदलाव आया है, देश की राजनीति में बदलाव आया है, तो आदिवासी वोट बैंक उनकी कांग्रेस की थी, पूरे देश में टूट गई। अच्छा, काम है तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस बार बीजेपी, क्योंकि 27 साल से बीजेपी गुजरात के अंदर है। मैं नहीं मानता हूँ एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो काम किया है, देखने वाला काम किया है। Now, it's very important to pay attention to the voter dynamics in the Jamalpur-Khadiya constituency, as Muslims make up for about 60% of the population here. So, in many ways, it's a litmus test for the Bharatiya Janata Party's Sabka Saath model. The All India Majlis-e-Ittehadul Muslimin has fielded their state president for this seat. So, we in fact managed to speak to some local residents in the constituency to sense the mood in the build-up to the elections. Behind me is this particular masjid, which is a 1000-year-old masjid, quite famous place over here. And this time it's just not BJP versus Congress, but also AIMIM. Sabir Kabriwala, who is the state president for them, had also jumped into the fight, which had made this entire fight very, very interesting. क्या काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो ऐसा है, जिसे कोई जीतता है, करता है बराबर, तो 1-2 महीने के लिए आता है। वो ये वोटिंग जैसे नजदीक आती है, इसी तरह काम कराना आते हैं। वोटिंग के बाद कोई आता नहीं है इधर। एक फ्री वोट हो जाए तो आते हैं यहाँ पर, वोट मांगने सब आएंगे, पर वोटिंग के बाद कोई यहाँ पर भटकेगा नहीं। पिछली बार यहाँ से कौन जीता था और फिर उसके बाद क्या वो यहाँ पर आए?
नहीं, उसके बाद अभी तक कोई यहाँ पर नहीं है। वोटिंग के टाइम पे तीनों नेता आते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह तीन आएंगे, पर वोटिंग के बाद कोई नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको लगता है कि जैसा बीजेपी कह रही है कि एक कानून होना चाहिए, यूसीसी भी लागू करेंगे वो लोग गुजरात कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग पक्ष में हैं उसके? नहीं, यूसीसी लागू नहीं। To tell you one thing, BJP is much better than all these Muslim parties and also Congress and all. At least what they promise, they do it. But these people, they don't do anything, and they just create on the basis of community. They just create that Muslims should vote for Muslim. No, they should vote for the persons who are developing this area. When Bhushan Bhatt was here, he was doing much better than what these other idiots are doing now. बीजेपी फिर से एक बार पावर में आनी चाहिए गुजरात के अंदर, या फिर चेंज आप समझते हैं होना चाहिए? आएगी इंशाल्लाह, इस बार भी आएगी। सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या आधार मानते हैं आप? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा है कि यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी, पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने से कोई कांग्रेस कोई वहाँ पर बन नहीं जाएगी, उसकी सत्ता नहीं आ जाएगी। जॉब्स की दिक्कत है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर गुजरात के अंदर? बहुत दिक्कत है। तुम देखोगे तो हर जगह पर तुम्हारे को सबसे पहली चीज ये रोजगार की चीज नजर आएगी। जब कोई भी यूथ है, यंग जनरेशन है, अगर उसको कुछ मतलब नौकरी या नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? कुछ भी ऐसा उंधा सीधा काम करने जाएगा। जनरली जो आप बोल रहे हो यूसीसी का जो आप बात कर रहे हो, जो वो चीज अभी क्यों लागू पड़ रही हो? इलेक्शन के टाइम पे नहीं, इससे पहले जब 10 साल आपकी सरकार थी तब से आप लागू पड़े तो आपको पता लगता है कि भाई यहाँ जनरली ये लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है कि पढ़ाई वाला कहना है कि पोल गेम में कही एक तरीके का इलेक्शन आ रहे हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने किया। के हिसाब से कौन जीत रहा है इस बार गुजरात में? गुजरात में तो ये वक्त फाइट है, और यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी फाइट तो है। अभी क्या है कि कैंडिडेट 2 थे, अब 3 हो गए। अब आप वाला हो गया, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, अदर और हो गया एक चौथी पार्टी। ये डिवाइड अगर समझदारी से वोट नहीं करेंगे तो फिर भी भाजपा को जाने की शक्यता है, ऐसा है। Very interesting voices from the Jamalpur constituency here, where it's a triangular fight just not between BJP and Congress, but also AIMIM jumping into the fight, and clearly becomes very interesting as to whether the BJP can get again this seat back or not is something which it will be decided on December 8th when the results will come. This is Ishwar. Well, let me go across to our guests, Mr. R. Rajgopalan, senior journalist, as well as Mr. George Kurian, political analyst. And as we saw from the Jamalpur-Khadiya constituency, there was no unanimity in which party was in fact the favourite in that constituency, or for that matter in Gujarat as well, at least among the Muslim community. Mr. Kurian, coming to you first. Now, traditionally, the Muslim communities, as we've seen in the state of West Bengal, or for that matter even in Delhi in 2020, it pretty much voted like a monolith, with more than 75% of the Muslim vote going in favour of the Aam Aadmi Party in Delhi, and then about 77 for the TMC in West Bengal. Do you see that replicating itself, where the Muslims might rally behind a particular political party in Gujarat, or will the votes be split this time around? Well, not really. I strongly believe that the voters are too smart to choose from the best option that they have. And coming back to Gujarat and the assembly elections, the BJP is in a situation today. It's like it's kind of a situation where it's like a roasted wire rope, where of the bridge of Morbi, where the situation where the nation has seen what has it translated into. So it's in a position where it cannot go back to its voters and to ask for votes, because in the name of development they have just done nothing in place, and so it's difficult for the BJP to come back to power at this point in time. Okay, let me take this across to Mr. R. Rajgopalan. Mr. Rajgopalan, there was a very interesting set of voices that we heard from one specific constituency in Ahmedabad, where several Muslims seem quite amenable to the BJP coming back to power in the state and also perhaps winning in the constituency. There were, of course, other contrasting reactions too. How do you see the Muslims voting this time around in this election? They make up for about 9% of Gujarat's population. Muslims are divided, especially after Article 370 and also especially after Triple Talaq. These two have given a Muslim an eye-opener. Even minorities, including Christians, Muslims, they are also awakening to the position. Congress is having its own natural death. Therefore, there is no minority community who can long for to go to any other political party. That is why my impression is they will come back to BJP. Out of 8
interviews your correspondent done, 6 are favoring BJP. It's a sample survey. So therefore, my understanding is Uttar Pradesh. You talked about Delhi and West Bengal. Yes. I take an example of Uttar Pradesh. Why Yogi Adityanath returned to power again? Because the Muslim women voters are voted for BJP. So therefore, in Delhi also, in Gujarat, everywhere, in 10 years, past 10 years, is there any danga hua tha ka Gujarat mein? Muslims are happy. Even 3 Muslim boys have said that we are happy with BJP, though they are having some different voices. Sorry to interrupt you there, Mr. Rajgopalan, as well as Mr. Kurian. We have some more details coming in from the Jamalpur-Khadiya constituency. What about the women there? Now, they form a significant proportion of the electorate there. Are they with the BJP or are they looking for a change? Here's what the women voters of Jamalpur-Khadiya had to tell us. Currently, I am in these very narrow lanes of Jamalpur-Khadiya, and there are a lot of Muslim women voters who are here, and to understand what they think, how did the BJP worked in the state of Gujarat, and because in 2017 assembly elections it was the Congress who defeated the BJP, whether this time the BJP can come back and win the seat over here in Jamalpur-Khadiya is something that we will surely get the answers from these ladies. आपका नाम बताइए हमें क्या है? फरीदा बानू. अच्छा, पिछले 5 साल तो यहाँ पर कांग्रेस की सीट थी आपके जमालपुर में, लेकिन इस बार आपको लगता है कि बीजेपी आएगी और पूरे गुजरात के अंदर बीजेपी ने काम किया है? अच्छा, 100% बीजेपी सरकार आएगी और उन्हीं को ही लाना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, बीजेपी सरकार की वजह से हमारे काम आसान हो गए. आपको राशन, आपको सुरक्षा, आपके लिए जो सड़कें हैं, पानी, जल भराव, ये सब तमाम जो छोटी छोटी चीजें, इस पर काम किया गया है? हाँ, किया गया, पर आगे भी अभी अच्छा ही होना चाहिए. हम लाएंगे तो उनको ही लाएंगे कि हमारा पूरा काम अच्छा होता है यहाँ पे. खुश हैं आप यहाँ पर काम से, भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, खुश है. आप चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए गुजरात के अंदर? हाँ. अच्छा, आपके यहाँ पर ये बताइए कि राशन, पानी, ये सब समस्याएं तो नहीं है घर में बच्चों के लिए? नहीं है? नहीं है. These voters over here are very happy. These are Muslim women voters who will definitely vote, and they are certainly very happy with the work that the Modi government had did. And these are very narrow lanes which I have come through a long way. And this is Jamalpur-Khadiya. Remember, it is BJP versus AIMIM as well, because 1 lakh voters approximately are Muslim voters here in this constituency, and it is AIMIM state president Mr. Sabir Kabilwala had also now jumped into the fight, looking at the dynamics of this constituency. Mr. Rajgopalan, coming back to you, do you believe that the AIMIM is usually overestimated in electoral contests like this? They did pretty well in Bihar, mind you, but do you think they get a disproportionate amount of attention when they choose to contest in elections, especially in Muslim-dominated constituencies? I don't think so. In Bihar, what happened? 5 MLAs were there. All of them, AAM, they went to Nitish Kumar, and also some to RLD. So whatever that AAM is making inroads, that is not going to happen, translate into action. AAM will definitely either defect to BJP or to Congress. AAM is irrelevant in North Indian politics. Whatever is said and done, in the previous segment, what I told you, yes, women voters, especially minority women voters, either it is Christian or Sikh or Muslim, they are all for Mr. Narendra Modi and BJP as far as women voters are concerned, because they have not seen any right in these past 10 years. Absolutely. Thanks a lot for that, Mr. Rajgopalan. Thank you so much. And also Mr. Kurian for joining us on this broadcast. We have to slip into a short break for now. We'll come back with more updates lined up for you on the other side. Stay tuned.